Hello everyone, hope you're doing well. So today we thought of discussing this article. This is a very interesting article, and this article particularly talks about infertility, something that is called hidden infertility. We were also unaware of what this term means, but actually this article tells us about that there is an hidden infertility present among the Indian population and why Indian population is also at a disadvantage. So basically, this article can be very important from the point of view of society, ethics, essay. So that can be very well understood from this. So let's start with the article. So basically, article starts with some statistics that 2019 to 21, the total fertility rate, it's TFR, total fertility rate of India was 2.2. Now, in 2015-16, this was it was, yes, just a minute. In 2015-16 it was 2.2, and in 2019 and 20 it became 2, single 2. Now this means that women are giving lesser number of births in their reproductive period. So this is the meaning of total fertility rate. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बताया कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2015-16 में 2.2 था, एंड total fertility rate in 2019 and 2021, 221 was about 2, मतलब दो बच्चे पैदा कर रहे थे women in their total reproductive cycle. Now the total fertility rate in the country has reached the replacement level, so they are talking about replacement level. To understand what is replacement level, इसका मतलब होता है कि the level of fertility which is the number of children needed to replace the parents. Needed to replace the parents. So मतलब one kid has two parents, but this is just an average that is taken. एक तो एक फैमिली में दो बच्चे होने चाहिए ताकि वो उन दोनों पेरेंट्स को रिप्लेस कर पाए. So we are right now at the replacement level, कि we are just at the replacement level, and replacement level has been taken into account after accounting for fatalities, skewed sex ratio, infant mortality, etc. तो ये है रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब. द पॉपुलेशन स्टार्ट्स फॉलिंग बिलो दिस लेवल. तो रिप्लेसमेंट लेवल से अगर TFR कम होना शुरू हो जाए तो पॉपुलेशन फॉल होनी शुरू हो जाती है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे अगर आपका TFR होता है तो पॉपुलेशन फॉल करनी शुरू हो जाती है, और TFR अगर रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर होता है तो पॉपुलेशन राइज होनी शुरू हो जाती है. All right, let's understand what's next. The population replacement rate, which is the fertility rate needed to maintain a society's population size, is 2.1 children per women. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 2.1 हमें रिक्वायर्ड है एंड 2 हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है, तो दैट इज़ वाई पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन कर रही है. Countries with fertility rate below this number may experience an overall older demographic, मतलब उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा ओल्ड लोगों से होगी, भरी होगी, एंड अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज ओवर टाइम. तो मतलब उनका पॉपुलेशन साइज भी कम होना शुरू हो जाएगा. अगर आपने बेल कर्व देखा हो पॉपुलेशन का, तो यहाँ पे ओल्ड होता है, यहाँ पे मिडिल क्लास होता, यहाँ पे मिडिल एज्ड पीपल होते हैं, और यहाँ पे यंग होते हैं. तो अगर ऐसा बेल कर्व बनता है पॉपुलेशन का, दिस इज जेंडर मेल एंड फीमेल, तो दिस इज कॉल्ड अ हेल्दी बेल कर्व. अगर ये बीच में से मतलब मिडिल की पॉपुलेशन ज़्यादा है, सो देन इट्स अ मॉडरेट. एंड अगर यहाँ पे, वैसे दिस इज़ बैड, दिस इज़ वॉट वी आर राइट नाउ गोइंग टूवर्ड्स, कि यंगर पॉपुलेशन कम है, मिडल उतनी ही है, और ओल्ड की ज़्यादा है, तो हमारी डेमोग्राफिक, जो बूढ़े लोगों की डेमोग्राफिक्स हैं वो बढ़ जाएंगी इन कंट्री में, अगर इनका ऐसा बेल कर्व शेप पॉपुलेशन ग्राफ होगा. Now, according to World Bank data, the global fertility rate was 2.4 children per woman in 2019. 2019 में 2.4 children per woman था. This rate is approximately half of what it was in 1950s. 1950s में 4.7 था fertility rate. And more economically developed countries such as Australia, most of Europe and South Korea tend to have lower rates than do less developed or लो इनकम कंट्रीज. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं बेसिकली उनका फर्टिलिटी रेट इससे भी कम होता है.
एंड देन इसके बाद एक एग्जाम्पल लेके इन्हें समझाया गया कि एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं बहुत ही फेमस, एंड उनसे बात करके देयर पॉइंट ऑफ व्यू हैज़ बीन कैप्चर्ड इन दिस आर्टिकल. The urban fertility rate has reached the minimum level of 1.6, which is a major concern. However, the rural fertility rate is 2, and overall fertility rate is also 2. Now, urban fertility rate, हमने एक total fertility rate पढ़ा, एक urban fertility rate is 1.6. मतलब अर्बन एरियाज में एक वुमेन 1.6, मतलब 1.6 एक बच्चा पैदा करते हैं अपनी टोटल रिप्रोडक्टिव साइकिल में. रूरल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट 2 ही है, मतलब एक वुमेन 2 बच्चे पैदा करते हैं अपने टोटल फर्टिलिटी रिप्रोडक्टिव साइकिल में, रिप्रोडक्टिव एज में. एंड फाइनली जो ओवरऑल फर्टिलिटी रेट है OFR वो भी 2 ही है अभी. बट फॉर अ डेवलपिंग नेशन टू कीप अ बैलेंस विद डेथ रेशियो एंड न्यू पॉपुलेशन वी नीड 2.3 फर्टिलिटी रेट. सो हमें रिक्वायर्ड है 2.3 फर्टिलिटी रेट की, बट अभी हम हैं 2 पे. डॉक्टर सिंह रीजंस, तो इसका एक जो कारण है वो लेट मैरिज ट्रेंड्स इन अर्बन एरियाज है, इज अ प्राइम फैक्टर फॉर डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ फर्टिलिटी. सो एक इसका जो फैक्टर है वो है लेट मैरिज. और ये कहाँ पे है? दिस इज इन अर्बन एरियाज. A woman gets married generally after 27-28, then she needs time for settling down and tries for a child. After 1-2 years, they visit the doctors if they cannot conceive. Now, इसमें बोला गया है कि जो प्राइम फर्टिलिटी एज होती है women की, that is 20 to 25 years. She argues that after this period, fertility remains in plateau condition to 30 years and starts declining after 30 years. So basically, जो fertility रेट है दैट इज 20 to 25 एज प्राइम फर्टिलिटी. फ्रॉम 25 to 30 it's a plateau, and from 30 it starts declining. So infertility is a disease of the, now they're defining infertility कि क्या problem है, what is it actually infertility. It is a disease of the reproductive system defined by failure to achieve clinical pregnancy after 12 months or more of regular unprotected sexual intercourse. Now there are two kinds of infertility that happens. First is primary infertility, जिसका मतलब होता है couple has never conceived. एक होती है secondary infertility, which means that the couple has experienced a pregnancy before but has failed to conceive later. Now uh, they are also talking about that this is not just a problem of females, but this is also problem for males, because they're saying in males also the fertility begins declining after 40 years. So female may it start declining after 30, and in males it starts declining after 40. This is just a myth that male can remain fertile for 60 years. Most of the couple visits doctor when the fertility rates already starts declining. Now, the most important thing that this article tells us about is that India और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें 5 साल का फर्टिलिटी का डिफरेंस है. मतलब रिसर्च हैज फाउंड दैट ओवेरियन एजिंग ovarian aging of women is around 5 years advanced in comparison to the US and UK, which is a major concern. So मतलब US UK से हमारी जो women population है उनकी ovarian aging जो है वो ज़्यादा है. It means that if a woman can produce a child in the age of 40 in the US and the UK, in India the age will only be 35 years. So this is something that is very concerning and alarming. However, whether the demographic condition or climate or race is responsible for this is not yet known. So they don't know what is the situation, what is the responsibility, causal effect for this. Male infertility, what happens? The main reasons for male infertility are rising stress, food alterations, sedentary lifestyle, irregular working style, and other factors are also responsible. Every second or third male is infertile or subfertile in India. We rarely find 20 million spermatozoa count in any male, which used to be around 50 to 100 million earlier.
If we find even 115 million sperm count in a male, we consider it okay. Sperm dying is the main cause of male infertility. तो आपको मेल इनफर्टिलिटी पता चला, उसके रीजंस पता चले, देन आपको कॉज भी पता चला मेन इनफर्टिलिटी का, वो है स्पर्म डाइंग. Now this article concludes by saying IVF, then they say that the doctors are saying that IVF will also be successful when both the males and females are fertile. But if they have a problem in producing eggs and healthy sperm, then IVF will also not be successful. Next and the last point they say is that not this is not from sourced anywhere, but there's also an IVF specialist that mentions that nearly 40% of male and 40% of female and about 20% of both couples contribute to infertility. So basically, this idea talked about the total fertility rate. That is one of the most important thing. Rural fertility rate, urban fertility rate. देन आपको पता होना चाहिए कि रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, और रिप्लेसमेंट लेवल कम ज़्यादा होने से फर्टिलिटी रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है. पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक चार्ट्स एंड ग्राफ्स पता होने चाहिए आपको. एंड बेसिकली हमारा अब टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है वो पता होना चाहिए, दैट इज़ 2. 2015-16 में हमारा 2.2 था फर्टिलिटी रेट, और अब 2 है. रूरल फर्टिलिटी रेट 2 है एंड अर्बन फर्टिलिटी रेट 1.6 है. So basically, this was the article on about fertility in India. So, and this was a very interesting article to read. And you should also know about ovarian aging. Yes, that's it. So thank you everyone for tuning in, and do share and subscribe the channel for more videos like this. And keep subscribing us, keep letting us know what articles you want and need, and we'll definitely make some more videos on that. Thank you everyone for watching, and all the best for exams.